हाय एवरीवन मु ज्योति प्रकाश आपण मन को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर आउटलुक को फर्स्ट पार्ट रे आमे AHO 2019 रो क्वेश्चन एनालिसिस करथिले 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस करथिले बर्तन एटा हो जदार सेकंड पार्ट आमे 31 नंबर क्वेश्चन रु आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिवु तो डायरेक्ट आमे विदाउट वेस्टिंग टाइम जीवा मु टिके जल्दी जल्दी टच करने ट्राए करी कारण लास्ट टाइम वीडियो टिके लेंथी हो जाइतिला तेणु आम जल्दी जल्दी टाइम मात्र कम अच्छे तेणु आम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करवा और देखा जे केमिति क्वेश्चन रे बहुत गुड़े आंसर आम से टच कर बहुत गुड़ा पॉइंट टच कर तो टाइम वेस्ट नक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को जीवा 31 नंबर क्वेश्चन रु एनालिसिस करियो 31 नंबर क्वेश्चन द ट्राइजेनेरिक हाइब्रिड इन सिट्रस ऑफ डिफरेंट जेनरा तो एटरे ऑप्शन अच्छी लाइम क्वाट सिट्रेंस क्वाट सिट्रम क्वाट कुम क्वाट तो राइट आंसर हो सिट्रेंस क्वाट तो सिट्रेंस क्वाट हो राइट आंसर तो एटा हो तीनटा जिनस जेहेतु ट्राइजेनेरिक कहछि तीनटा जिनस को क्रॉस करी गोटे हूँ सिट्रस गोटे सिट्रस गोटे हूँ पनसीरस गोटे हूँ पनसीरस एवं आउ गोटे हूँ फर्टुनेला स्पेसीस फर्टुनेला तो तीनटा को क्रॉस करिके हमर ट्राइजेनेरिक करा जायछि बाकी गुड़ा मध्य क्रॉस बाकी इस प्रकार क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करिया हले हमको तार क्रॉस गुडी को मन रखिया पड़िबो नले हमें भूल करवाटा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहउछि तो आम जीवा बर्तमान सेकंड क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन द फास्ट ऑर्डर सिलेप्टिक ब्रांचेस आर यूजुअली फॉर्म्ड इन तो प्रथम जानिया दरकार जे व्हाट इज सिलेप्टिक ब्रांच से ब्रांचेस जो गुड़ा कि विदाउट रेस्ट पीरियड कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो एटा जनरली अनफेवरेबल कंडीशन रे जो प्लांट गुड़ा ग्रो हुए से गुड़ा हुए तो एटी आंसर आमर ऑप्शन रे अछि एजेल मार्मलस एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस जिजिफस मोरिसाना ग्रीवस सविनिकोलिस तो राइट आंसर हूँ जिजिफस मोरिसाना दैट इज बेर रे आमर सिलेप्टिक ब्रांचेस देखा जाए जनरली जो ब्रांच गुड़ा आमर नॉर्मली देखा जाए दैट इज इलेक्ट्रिक प्रोलेप्टिक ब्रांचेस सो दी प्रकार ब्रांचेस आमर देखा जाए जानिया दरकार दी प्रकार ब्रांचेस गोटे हूँ प्रोलेप्टिक आउट हूँ सिलेप्टिक तो प्रोलेप्टिक जोटा सेटा हूँ रेस्ट पीरियड आफ्टर ए रेस्ट पीरियड है आफ्टर ए रेस्ट पीरियड किंतु सिलेप्टिक ब्रांचेस रे नो रेस्ट पीरियड सेठी रेस्ट पीरियड किसी न थाए नो रेस्ट तेणु आमर जेहेतु आमर रेस्ट पीरियड रुहेनी तेणु सिलेप्टिक ब्रांचेस जनरली को देखा जाए ना आमर जिजिफस मोरिसाना रे आमर देखा जाए सिलेक्टिव ब्रांचेस हाँ आउट कौन क्वेश्चन हो पार ना आमर बेर एटू गोटे हूँ एरिड बा सेमिरिड कंडीशन में ग्रो हुए तेणु बेर रे कौन ना आउ किसी मेकानिज्म पिकुलर मेकानिज्म देखा जाए जोटा कि आमर कॉमनली मे भी आसीपारे क्वेश्चन रे गोटे हूँ आमर पॉलीमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म जमती विभिन्न प्रकार मॉर्फोलॉजिकल अलग देखा जाए पॉलीमॉर्फिज्म गोटे देखा जाए आ गोटे सूट टिप एब्सिशन सूट टिप एब्सिशन तो युवा किसी कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि आमर बेयर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मध्य जदि ऑप्शन रे थाए तो सेठी राइट आंसर हम बेयर देन 33 नंबर क्वेश्चन व्हिच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज कैल्सीफ्यूज क्रॉप सो प्रथम जानिया दरकार कोटा कैल्सीफ्यूज क्रॉप तो कैल्सीफ्यूज एठी जो नीचे मैंगो बानाना सिट्रस डेट पाम तो राइट आंसर होची बानाना सो कैल्सीफ्यूज मीन्स जे रिच इन कैल्शियम है कैल्सीफ्यूज मीन्स रिच इन कैल्शियम तो देखो दी प्रकार थाए गोटे हूँ कैल्सीफ्यूज आउट हूँ कैल्सीकोल कैल्सीफ्यूज एंड कैल्सीक्रो कैल्सीफ्यूज हूँ माने लो कैल्शियम
soil, low calcium soil, low calcium soil. Calcic mean high calcium soil, high calcium soil. So जो soil calcium rich ହେଇଥିବ ସେଠି calcic coal crop କୁହାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା calcium deficient ହେଇଥିବ ସେଇଟା calcic fuse crop କୁହାଯିବ। ତେଣୁ generally ଯେଉଁଟା alkaline soilରେ grow ହୁଏ that is calcic coal crop, ଯେଉଁଟା acidic soil ବା neutral soil grow ହୁଏ that is calcic coal crop। ତ ସେଇଭଳିଆ calcic coal cropରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା calcic fuse cropରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ calcic fuse cropର that is also ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ବାନାନା ଅଛି ତ ବାନାନା ଇଜ୍ ଏ calcic fuse crop। Then 34 number question, the bark of which fruit is rich in white gummy latex called chicle? Very easy question, sapota, jackfruit, mangosteen, custard. So the right answer is the sapota। हाँ ଆଉ sapota ନା chewing gum ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଲାଟେକ୍ସଟା chewing gumରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। Then the retention of vitamin C, 35 number question, the retention of vitamin C in amla is due to the presence of option beta sorbitol, palmitic acid, alanine and leucoanthocyanin। so ଏଠି right answer ହେଉଛି ଆମର leucoanthocyanin, କାରଣ the leucoanthocyanin prevents the oxidation of vitamin C। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେହେତୁ ହାଇଲି ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସସେପ୍ଟିବୁଲ୍ ଟୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍, ତେଣୁ ଲ୍ୟୁକୋଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ଦେନ୍ 36 number question, which arid fruit is the richest source of beta carotene? ତ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସିରିୟସ୍ ପେରିଭିଆନସ୍, କୋରିଆ ଡାଇକୋଟୋମା, କ୍ୟାପାରିସ୍ ଡେସିଡୁଆଲସ୍, ସାଲଭାଡୋରା ଏଡିସ୍। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ମାଇନର କ୍ରପ୍ସ ବା ଅଲ୍ ଆର୍ ଏରିଡ୍ କ୍ରପ୍ସ। ସୋ ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରିଚେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍? ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଟା। ସୋ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଟା ରିଚେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପାରିସ୍ ଡେସିଡୁଆଲସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କମନଲି କୁହାଯାଏ କଇର୍ କୁହାଯାଏ। ତା କମନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କଇର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପାରିସ୍ ଡେସିଡୁଆଲସ୍। ଜେନେରାଲି ଏରିଡ୍ ରିଜନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଥର୍ ରିଜନ୍ ଅଛି ମରୁଭୂମି, ସେ ରିଜନ୍ରେ ଏ କ୍ରପ୍ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜନ୍ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍। ସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାପାରିସ୍ ଡେସିଡୁଆଲସ୍। Then 37 number question, Tri-G1 is a variety of the correct answer is guava। so G is known generally ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ ଯେ G for guava। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆପଣ ହେବେ, ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା Tri-G1 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି Tri-1 is a variety of rice। Tri-1 is a variety of rice but Tri-G1 is a variety of guava। Then mummification is a problem of which fruit crop? So ପ୍ରଥମ କଥା mummification ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, what is mummification? Mummification means ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରିଭେଲ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗାଲ୍ structureକୁ। that type of disorder is known as mummification, that is the fruit is mummified। ଯେମିତି ମମି ଆମର ଯେଉଁ ଇଜିପ୍ଟରେ ମମି କରାଯାଏ, that means the structure is dry and dead। so mummification is a problem of, here the right answer is guava। mummification also found in custard apple। এটা ମନେ ରଖି ଯଦି ଅପସନ୍ରେ guava ନାହିଁ ତ custard appleରେ ମଧ୍ୟ mummification ଦେଖାଯାଏ। so here the right answer is guava। then another 39 number question, which is a frost tolerant rootstock of ananas? so these are the different ananas species, that is Annona glabra is commonly known as pond apple। Annona reticulata, Annona cherimoya, it is the cherimoya, Annona squamata is
known as sugar apple. Ananas squamosa, it is known as sugar apple, common name. So common name also is very important. So here the right answer is float is the pond apple, it is Annona glabra. So the rootstock selection is also very important. ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେଉଁ ପାଇଁ କେଉଁ rootstock ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଇନର ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ର କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମାଇନର ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ rootstock, ଯେମିତିକି ଆମର ଆନାନା ଗ୍ଲାବ୍ରା ପଣ୍ଡ ଏପଲ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ଫିଗ୍ରେ ଯେମିତି ଫାଇକସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ରେ এটা হচ্ছে ফাইকস গ্লোমেরেটা, ফাইকস গ্লোমেরেটা এটা କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫାଇକସ୍ ଗ୍ଲୋମେରେଟାଟା ଆପଣଙ୍କର ନିମାଟୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଲାଗେ। ଏଟା ହେଉଛି ନିମାଟୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ, ନିମାଟୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ନିମାଟୋଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ଆମର ଜାମୁନରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଜାମୁନରେ ଜାମୁନର କମନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ସିଜିଜିୟମ୍ କ୍ୟୁମିନି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି ସିଜିଜିୟମ୍ ଫ୍ରୁଟିକସମ୍, Syzygium fruticosum. Syzygium fruticosum. This is used for termite resistance. Termite resistance by this rootstock is used generally in Syzygium fruticosum. So एमती किसी rootstock जोड़ा कि किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होची, स्पेशल पर्पस ପାଇଁ यूज होची, सेगुड़ा को हमको मन रखिया होबो, सेगुड़ा क्वेश्चन आसी पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the calyx of which flower is pomegranate is orceolate? Is very good question. Here what is the orceolate means? Orceolate means the orceolate meanings the vase shaped. Orceolate means vase shaped flower. Vase shaped flower means it is the broad base, broad flower. So generally the calyx of which flower in pomegranate is orceolate? The right answer is hermaphrodite. Hermaphrodite flower is orceolate. And the male flower is campanulate. The male flower is campanulate or commonly known as bell shaped. Okay, bell shaped. So male flower is bell shaped and hermaphrodite flower is vase shaped. And here the other questions may come, अलगा क्वेश्चन मध्य आसी पारे। एमती कि देखंतु एटी हमरो pomegranate generally तीन प्रकार फ्लावर देखा जाए, one is male, another is hermaphrodite, another is intermediate. Generally male and hermaphrodite is very distinct. hermaphrodite जोटा कि vase shaped हुए एवं male flower टा होची bell shaped एवं this is functionally male हैला, male means this is functional male, abortive ovule, abortive ovary is present with few ovules, so it is functionally male. जेहेतु फ्रूट सेट हुए नहीं तो functionally male एवं hermaphrodite is very prominent. So एमती भी क्वेश्चन आसी पारे, जेहेतु मेल और hermaphrodite फ्लावर देखा जाए जनरली, तो बेले बेले क्वेश्चन आसे जी फंक्शनल एंड्रोमोनोइसी, फंक्शनल एंड्रोमोनोइसी condition. Functional endomonoicy condition is found in pomegranate. कहीं ना एंड्रोमोनोइसी कंडीशन क्या कह जाए ना, जिते बड़े गोटे प्लांट रे मेल फ्लावर और hermaphrodite फ्लावर गोटे प्लांट रे देखा जाए, द कंडीशन इज नोन एज एंड्रोमोनोइसी एंड द मेलनेस इज हियर इन pomegranate इज फंक्शनल. That is why the term functional endomonoicy is found in pomegranate. Then next question, the optimum age for transplanting of coconut seedling. The optimum age for transplanting of coconut seedling is 1 to 2 months, 2 to 4 months, 4 to 6 months, 9 to 12 months. So here the correct answer is 9 to 12 months. And if in case it is in oil palm, in oil palm, the optimum age is 12 to 14 months. In areca nut, or areca palm, it is 1 to 2 years. So you can remember this type of questions.
So 9 to 12 months is the optimum age of transplanting coconut seedling. Then 42 number questions. Which hybrid is a progeny of cross between West Coast Tall and Gangavardhan? So here the right answer is simply Karaganga. You can remember all the cross hybrids. There is Laksha Ganga, Anand Ganga, Chandra Laksha. So these are different type of crosses. So ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. Then the most commercial viable technique for propagation of cashew nut. So आमको cashew nut ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ cashew nut रे आमे जनरली कौन करूँ ना सॉफ्ट टूल ग्राफ्टिंग यूज करूँ. जनरली आमे कौन ना 10 ରୁ 12 months जनरली 1 year को नौ 1 year प्लांट स्कियन नौ तो सॉफ्ट टूल ग्राफ्टिंग ही करूँ. तो मोस्ट कमर्शियल वायबल टेक्निक फॉर प्रोपागेशन ऑफ कैश्यू नट इज द सॉफ्ट टूल ग्राफ्टिंग. किंतु एठी अलग ऑप्शन भी अच्छी एम्ब्रियो ग्राफ्टिंग, एपिकोटल ग्राफ्टिंग, शूट टिप ग्राफ्टिंग. सो एपिकोटल ग्राफ्टिंग इज जनरली डन इन मैंगो रे एपिकोटल ग्राफ्टिंग करा जाए. एवं शूट टिप ग्राफ्टिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज माइक्रो ग्राफ्टिंग. इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज माइक्रो ग्राफ्टिंग. एवं एटा कौन पे करा जाए ना एटा जनरली सिट्रस रे करा जाए टू प्रोड्यूस भाइरस फ्री प्लांट्स, भाइरस फ्री सीडलिंग्स पाई आमे शूट टिप ग्राफ्टिंग, भाइरस फ्री भाबे हम शूट टिप ग्राफ्टिंग करू जेटा कि जनरली साइट्रस रे करा जाए. देन 44 नंबर क्वेश्चन. इन डेट पाम द डाइसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स. तो निहाती आपण जो हमर 5टा इंपोर्टेंट स्टेज रही अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डेट पाम सेटा मन रखिए और कौ स्टेज रे कौन होउची से जिनसटा बहुत इंपोर्टेंट. बहुत क्वेश्चन एते बहुत आसे. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हमर 5 डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट दैट इज द हाबाबुक स्टेज. फर्स्ट इज हाबाबुक स्टेज. Second step is Kimmerer stage. Third stage is Khalal stage. That is Khalal stage. Khalal. And fourth stage is Rutab. And fifth stage is Tamar stage. So here all four out of 5 stages, 4 stages is mentioned. One जो stage that mention है नहीं, that is Khalal stage. Khalal stage means when the dark green fruit is turns to light green. जेतोले पूरा डार्क ग्रीन कलर फ्रूटा लाइट ग्रीन को जेतोले कलर दा ब्रेक हबो, that is called Khalal stage. So all the stages in date palm is very important. So एठी से कहिछि जे the date palm the disaccharides are converted into monosaccharides. So at Khalal stage जेतोले ग्रीन स्टेज रो लाइट ग्रीन को हुए, खल स्टेज रे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपनकर रही था सुक्रोजटा मैक्सिमम अमाउंट रही था. खल स्टेज रे सुक्रोज मैक्सिमम रही था. किंतु जो खलल रु रुतब को जाए, रुतब स्टेज रे कौन हुए ना सुक्रोजटा ब्रेक डाउन हो जाए. सो सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड. इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मोनोसैकेराइड दैट इज फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज. सो हियर द राइट आंसर इज द Rutab stage where the disaccharides are converted into monosaccharides, the Rutab stage. So आप मैंने ट्राई करेंगे जे डिफरेंट स्टेज ऑफ डेट पाम को जानिया पाई तर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पाए. तो 45 रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एट द अर्ली स्टेज इन ऑयल पाम. इट इज द सिंपल क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज द एब्लेशन. ये जनरली अर्ली स्टेजेस रे करा जाए जेतेबेले इन्फ्लोरेसेंस अर्ली स्टेज रे आसी जाए सेतेबेले बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को रिमूव कर दे जाए टू इम्प्रूव द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, द थिकनेस ऑफ द स्टेम. तो इम्प्रूव करिया पई एब्लेशन करा जाए. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन इज द पिंचिंग. व्हाट इज ड्यूरा, व्हाट इज डिब्लूजिंग. पिंचिंग जनरली इन floriculture crops, ornamental crops pinching करा जाए to develop the lateral branches to bushy structure provide करिया पे pinching करा जाए. bushy structure plant को provide करिया pinching करा जाए. and
The dura is also related to palm. So there are three types of palm. One is dura, one is piscifera, one is piscifera, and another is tenera. So tenera is the cross between dura and piscifera. So dura piscifera cross with tenera. Tenera is a hybrid of oil palm. Generally, most cultivated hybrid form is tenera in oil palm, and dura is the that is thick cornered, and less thick mesocarp in dura, and in piscifera it is the cell-less species is the piscifera in oil palm. And then is 46 number questions. Which cocoa variety is used in luxury chocolate? It is very simple question. So it is in Criollo. The high quality chocolate is found in Criollo. Then next question. Chupon is a growth term related to seedlings. So here ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ଚୁପନ କ'ଣ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ କୋକୋଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋକୋଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମନେକର ଯେଉଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋକୋଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍, ତ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ଭର୍ଟିକାଲି ଯାଏ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍. So vertical growth, then after some time a point, then the horizontal growth occurs. So the vertical growth is known as chupon. The vertical growth is known as chupon, and the horizontal growth, the horizontal branch is known as these are the fan branches. And the point where the vertical growth stops and horizontal starts, the point is known as jorquet. So you should know all the developmental stage, what is the vertical growth, what is the horizontal growth, what is the point at which the horizontal growth starts and the vertical growth stops. So you should all know these terms. Then 48 number question. The parentage of Bhubaneswar variety of cashew nut. So the Bhubaneswar variety, the parentage, it is the right answer is Bengaluru 36/3. We should know what are the varieties which is suitable for Odisha climatic condition. जेहेतु आपण मैंने ऑफिसर ही आसवे ओडिशा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे प्लांटेशन करेंगे, तो यू शुड नो व्हाट आर द वेराइटीज सुइटेबल फॉर Odisha climatic condition. One is Bhubaneswar 1, another is BPP 8, another is Dhano. These three variety are recommended for Odisha climatic conditions. So these three variety you should know all these parentage of these varieties. तो तार पेरेंट गोटे जाना ट्राए करेंगे, मैं आसीपारे मे भी next year. Then as a palm, areca nut is monoecious, dioecious, gynodioecious, and monoecious. So as a palm, the areca palm is monoecious, but dioecious condition, gynodioecious, what is gynodioecious condition, andromonoecious condition, टेक्निकालिटी टेक्निकल क्वेश्चन गोटे जाना दरकार. गाइनोडाइसिस कंडीशन जनरली पपाया देखा जाए, पपाया दिस इज कमर्शियली यूज गाइनोडाइसिस कंडीशंस. एंड्रोमोनाइसिस कंडीशंस देखा जाए मैंगोरे एंड्रोमोनाइसिस कंडीशन देखा जाए, जोठी कि एंड्रोमोनाइसिस कंडीशंस मीन्स व्हेन मेल फ्लावर प्लस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, दैट इज द एंड्रोमोनाइसिस कंडीशन. Then 50 number question. Black nose, a physiological disorder is associated with. Black nose, a physiological disorder associated with dead palm. So don't confuse with black tip of mango. Black tip is a disorder of mango. Black tip is a disorder of mango जोटा कि ब्रिकलिन, सल्फर डाइऑक्साइड, पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोक्साइड एथपाई ब्रिकलिन पाखरे जो मैंगो क्रॉप ग्रो कराए से ब्लैक टिप डिजर्डर देखा जाए. बट ब्लैक नोज इज एन सेपरेट डिजर्डर विच इज फाउंड इन डेड पाम. देयर इज अनदर डिजर्डर इन डेड पाम दैट इज नोन एज व्हाइट नोज. व्हाइट नोज ऑल्सो ए डिजर्डर, फिजियोलॉजिकल डिजर्डर इज फाउंड इन डेड पाम. सो एटा जनरली कौन हुए जो
वो बहुत ड्राई एरिड क्लाइमेट रे बहुत ड्राई विंड फ्लो हुए तो प्रीमेच्योर राइपेनिंग हुए एवं ड्राई हो जाए फ्रूटा एवं व्हाइट कलर एट कैलिक्स एंड ऑफ द फ्रूट एट कैलिक्स ऑन द फ्रूट द व्हाइट कलर डेवलप्स so this is known as white nose of date palm. So date palm is very important because it is an emerging crop and very high demand. तो डेट पाम सबू कौ स्टेज डेवलपमेंट हुए कौ स्टेज हार्वेस्टिंग करा इंडियन स्टेज रे ता डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर वेराइटी एगुड़ा सब जाना दरकार हाँ आउ गोटे क्वेश्चन हो पारे जे ब्लैक नोज को वेराइटी ससेप्टेबल गोटे अच्छी डेगलेट नूर and another variety is hayani. Another variety, these two variety hayani and neglet noor, these two variety are very susceptible to this black nose disorder. Ko both susceptible. Then 51 number questions. Coconut toddy is obtained by tapping unopened spade, unopened spadix, open spadix, open spade. So here the right answer is unopened spadix. So toddy is a clear sap that is collected from the inflorescence of the coconut जोटा कि coconut फूल inflorescence तब tapping करी करा जाए. So when it is fresh it is called as nira. जो फ्रेश थाए toddy जोटा collection sap टा तब nira कहा जाए. This is non-alcoholic but when it is stored fermentation starts it is becomes alcoholic. So this is known as toddy but nira is non-alcoholic, remember it. Then which grade of cashew nut falls under jumbo nuts? So there are different grades. So आमर जो रही organization जो रही SEPCI CEPCI SEPCI that is the Cashew Export Promotion Council of India. SEPCI that is comes under the Ministry of Commerce. So से different grades of cashew develop कर generally they prescribe 33 grades. They prescribe 33 grades of cashew but only 26 grades are available for export commercially. So 26 grades, out of these the most valuable, the most costly are the W180. So here means W means the whole kernel. So whole kernel, there are different grades: whole kernel white, whole kernels crushed. So there are different grades of cashew kernel. So W means whole kernel, and 180 represents the maximum number of nuts in a pound. So number of nuts per pound, it is the representation of the actual figure. So W180 means the whole nut kernel, that is 180 nuts in 1 pound. It is the actual meaning. So here the jumbo nuts means this is the right answer, that is in jumbo nuts there is 210 nuts in 1 pound. So 201 nuts in 1 pound. So this is the right answer. But the W180 it is known as the king nuts. It is the king nuts or king of cashew. It is the king nuts. W220 it is the jumbo nuts, jumbo. And W240 it is known as attractive nuts. It is known as attractive nuts. And W320 it is the easiest available and most commercially available in market, W320. And another is the lowest grade, that is W450. It is the cheapest among the whole kernel. It is the cheapest. Okay, so you should remember all the grades. Then plucking of tea leaves should be done before unfurling of. So what is the optimum stage, what is the ideal stage of the plucking of tea? So ideal stage is the 2 leaves and 2 leaves 1 bud. 2 leaves 1 bud. So third leaf, so before fourth leaf unfurling it should be harvested, simple. So the right answer is fourth leaf. Okay, so tea is also very important because tea, all the plantation crops, tea, coffee,
oil palm, cashew nut, coconut, palmyra palm, rubber, all the plantation crops are very important. ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ after from like it is almost equal like vegetable crops, fruit crops. କାରଣ plantation is very much important. It is commercial crops. It is very much important. ତେଣୁ plantation crop importance ଦେଇକି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ. Then the palmyra palm, it is the state tree of Tamil Nadu. It is the state tree of Tamil Nadu. So it is obviously a tropical crop, no doubt it is a tropical crop. Then another question, the tri-nut seeds selected from palmyra palm. तो देखिपे केमती प्लांटेशन क्रॉप रू गुड़ाए क्वेश्चन आसी तेणु प्लांटेशन क्रॉप को टोटली इग्नोर करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप को पढ़ार ही अच्छी. सो द ट्राई नॉट सिलेक्टेड फ्रॉम पाल्मर पाम. सो इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन. एटा जब न जानी थे आप करें. एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द सेक्स ऑफ द नट्स, सेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नट्स. तो ट्राई नट सीड्स तो पाल्मिरा पाम आप देखते जोटा आम जनरली आम लोकल भाषा ओडिया ताड़ कहू. तो पाल्मिरा पाम जनरली वन सीडेड हो पारे, टू सीडेड हो पारे, थ्री सीडेड हो पारे. जदि वन सीडेड अच्छी इट निहाती इट इज ए फीमेल, तो तार सेक्स एक्सप्रेशन हम फीमेल. जदि दुईटा सीड अच्छी जोटा कि डाई नट्स बा डबल नट्स आम कहे, तो से वन मेल वन फीमेल, वन मेल वन फीमेल. जदि तीन अच्छे ट्राई नट अच्छी से टू मेल प्लस वन फीमेल हम. सो here the right answer is 2 male 1 female. Okay, so the tri nut seed. एवं जदि कह जो व्हाट इज द आइडियल स्टेज ऑफ चूजिंग द मदर पाम ऑफ द पाल्मिरा पाम. तो मदर पाम चूज रो आइडियल एज हो 20 to 30 ईयर पाम को मदर पाम हिसाब से आम जदि सीडलिंग रो ग्रो करबा. तेणु ऑब्वियसली व्हाट इज द प्रोपगेशन मेथड इन पाल्मिरा पाम. ऑब्वियसली द सीड, तो सीड कलेक्शन को एज रो मदर पाम करा जो मदर पाम रो एज 20 to 30 इयर्स भीतर होइतिबो सेतर आमे करबा. बट इन केस ऑफ कोकोनट इट मस्ट 40 इयर्स पाम को आमे मदर पाम हिसाब रे ताको सिलेक्ट कर. ठीक अछि. देन 56 क्वेश्चन, द रिकमेंडेड प्लांटिंग डेंसिटी. व्हाट इज द प्लांटिंग डेंसिटी इन बॉर्डर्ड रबर. सो इट इज आल्सो ट्रिकी क्वेश्चन. सो बॉर्डर्ड रबर रे आम देखा पड़ो. देखो जनरली दी प्रकार अच्छे, गोटे हूँ बॉर्डर्ड रबर. ओके, वन इज बॉर्डर्ड रबर जोटा कि बॉर्डिंग करा जाए, अनदर इज सीडलिंग जोटा कि नॉर्मल. ओके, बॉर्डर्ड रबर भी पुणी दुई प्रकार अच्छे. बॉर्डर्ड रबर भी दुई प्रकार, जोटा बॉर्डर्ड रबर कौन गोटे फॉर हिली रीजन करा जाए, गोटे हूँ प्लेन रीजन. हिली रीजन जो स्पेसिंग यूज करा जाए दैट इज 6.7 3.4 मीटर. तो यार प्लांटिंग डेंसिटी रे आपनकर केतरा एकोमोडेट हम ना 445. प्लेन रीजन रे आम करूँ 4.9 प्लस 4.9 रे जोटा कि प्लांटिंग डेंसिटी हुए 420. सो सिंपल बॉर्डर्ड पाई प्लांटिंग डेंसिटी रेंज कर 420 रु 445 टा प्लांट पर हेक्टर. बट इन केस ऑफ सीडलिंग रे जतरा हम लोचे, बट इन केस ऑफ सेमती फॉर हिली रीजन फॉर प्लेन्स, हिली रीजन्स रे यूज होची 6.4 इंटू 3.1 539 प्लांटिंग डेंसिटी. सेमती प्लेन रे 479. ठीक है, कारण प्लांटिंग डेंसिटी से 4.7 4.6 4.6 रोज. सो the recommended planting density bordered rubber it is 420 to 445. it is the right answer. but in case of जदि ये क्वेश्चन आसता bordered रो मध्य सीडलिंग दे था, सीडलिंग हेले ये हम 479 to 539 for seedling. It is the right answer. So here the right answer is 420 to 455 in case of bordered rubber trees, but in case of seedling it is the right answer. Then brown blast is a major physiological disorder. So brown blast is a physiological disorder of, obviously the brown blast is a physiological disorder of the rubber. So brown blast is also known as TPD.
tapping panel dryness. It is also known as ground blast. It is a tapping dryness. तो रबरटा बहुत इम्पोर्टेंट जिन व्हाट इज टेपिंग पैनल ड्राइनेस इन टेपिंग व्हाट इज अप्लाइड टू इम्प्रूव द कलेक्शन ऑफ द लैटेक्स. सो बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे से आपको भल कि इंपोर्टेंस दे पढ़ा पड़ो. सो रबर इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट एमंग द प्लांटेशन क्रॉप्स. देन द मेजर प्रोडक्शन कांस्टेंट इन कैश्यू नट. सो मेजर प्रोडक्शन कांस्टेंट इज ऑब्वियसली यू नो द टी मस्किटो बग. जो टाइम रे इन्फ्लोरेसेंस हुए, जो टाइम रे फ्रूट सेटिंग हुए, फ्रूट इनिशिएशन हुए आमर अक्टोबर मासरू एप्रिल मास मध्य अक्टोबर एप्रिल मास भितर टी मस्किटो अटैकटा बहुत सिवियर हुए. तो इट रिड्यूसेस द यील्ड, इट रिड्यूसेस द 20 to 80%. सो 20 to 80% लॉस करे. सो इट इज ए मेजर प्रोडक्शन कांस्टेंट इन टी मस्किटो बग. जदि टी मस्किटो बग ऑप्शन नहीं कि आफ्टर टी मस्किटो जब किसी हुए जब इनसेक्ट पेस्ट दैट इज CSRB, दैट इज कैश्यू स्टेम रूट बोरर. इट इज द नेक्स्ट मेजर पेस्ट आफ्टर टी मस्किटो. ओके, देन व्हाट इज द shade growing coffee in India should be trained on. So it is a very confusing. So for coffee growing भल कॉफी प्यास shade is very important. भल कॉफी shade is very important. So there are two types of growing condition. One is shade growing coffee. Another is sun growing coffee, that is in open condition. It is under the shade and is open condition. So shade growing ପାଇଁ generally ଆମେ ट्रेंड करूँ सिंगल स्टेम एंड सन ग्रोइंग ପାଇଁ ଆମେ मल्टीपल स्टेम यूज करूँ एज इन इंडियन कंडीशन. बट अकॉर्डिंग टू OPSC द आंसर इज आंसर की अनुसार एठी कह जे शेड ग्रोइंग पे मल्टीपल स्टेम. बट यू कैन क्रॉस चेक द इन डिफरेंट बुक्स एंड देन वेरीफाई. बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू in Indian condition the shade growing condition is single stem and in multiple stem in open condition the use हुए. Okay, and in shade growing out important shade growing coffee is very much precious, very much economical as comparison to open growing condition coffee. Okay, एठी आउ गोटे क्वेश्चन भी हो पारे जे शेड ग्रोइंग ट्री हिसाब रे कॉफी प्लांटेशन कौन यूज करे. जनरली दीटा स्पेसीज गोटे हूँ डैडाप ट्रीज जोटा कि कॉमनली यूज करा जाए. अनदर इज सिल्वर ओक ट्री मध्य यूज करा जाए. सिल्वर ओक को परमानेंट सेट ट्री हिसाब से यूज करा जाए और दादुआ को टेम्पोरारी सेट ट्री हिसाब से यूज करा जाए. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन 16 number which phenolic variety has been developed through mutation. So it is an informatical database question. So here is two answer is there. One is RMT305, RMT303. These two are the mutation variety they are developed through mutation. So there are two other questions. Okay, so next 61 रो आमे नेक्स्ट वीडियो रे एनालिसिस करबा. कारण जेहेतु वीडियो बहुत लंबा हो जाउची स्टूडेंट्स माने बोर हो जाउतबे तो आमे पार्ट रे ताको डिस्कस करबा. सो एमती जदि आउरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहूथांती तो चैनल को अधिक लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु जहाँद्वारा कि मुझे मोटिवेट हेबी कि हाँ स्टूडेंट मैंने चाहूँ तांको डिमांड रही तो अधिक वीडियो अपलोड करने. सो आई थैंक यू.